Good afternoon, everyone. Mr. Bajaj, how are you, sir? Thank you so much. How are you, sir? Good to see you. Morning, you were in the other session. I was in this session. हरीश जी रवि आ रहे हैं कि नहीं? He's in Berlin, right? That which came from Reshma. Within 1 hour of the webinar. Okay, yes, we are comparing, sir. I'll send you. Hi, greetings. I'd like to welcome everyone for this concluding session of the post-budget webinar. In the morning, we had the Honorable Prime Minister talking about how tourism is extremely important for employment, for even branding a city. He spoke about how when there is a destination which takes off in a city, how that becomes a kind of a lever for the city itself to have higher visibility and branding. And of course, also creation of a lot of employment and jobs through tourism.
So we've had 4 breakout sessions today. I would request my colleagues Suman Billa and Gyan Bhushan to brief us on the same. Good evening. We had 2 breakout sessions pertaining to the Ministry of Tourism, one which is focused on the infrastructure announcements in the budget, and the other which is on the livelihood and skills. So as far as the infrastructure paras go, there are 3 paras. One is on para 89, which is on the creation of 5 tourism destinations in Purvodaya states. So I will just give 5 takeaways which have emanated from each of these budget paragraphs. So for Purvodaya states, the idea is to build an integrated tourism as an integrated economic region, which will be driven by connectivity, culture, and livelihoods. The idea is also to capture more value from large tourist volumes by improving packaging, clustering, and increasing stay duration. Enable them by providing clear policies, faster approvals, and also plan for balanced hotel infrastructure across all segments to attract investors. From a core value point of view, place communities at the center through homestays, crafts, storytelling, and cultural experiences. And lastly, to develop strong USPs like tea tourism, Buddhist circuits, waterfronts with food experiences, and film tourism to both spend and stay. So this was a wide-ranging discussion, but I've just summarized this into 5 key takeaways. Now, the next paragraph, which is para 90, is on development of Buddhist circuits in the Northeast. And the discussion was basically centered as to how the budget broadens India's Buddhist tourism vision by bringing the Northeast living Buddhist culture, which is monasteries, manuscripts, and tradition, into the mainstream. The idea is to address access challenges which require short, well-connected circuits with strong storytelling, multilingual guides, and better last-mile connectivity. The focus should be on involving monks, youth, artisans, and village enterprises to drive tourism through guiding, homestays, heritage walks, crafts, and cultural interpretation. Fourthly, build light infrastructure and conserve sacred landscape for authentic, sustainable experiences. And lastly, that the Northeast should be positioned as a living Buddhist Himalayan landscape through strong marketing, regional linkages, and ideas like a Buddhist pilgrimage visa. This lot of discussion had also happened on which are the sites which should form a part of it, and 12 sites have been located across the northeastern states. The 5 takeaways which pertain to the last para for discussion, which is para 69, which is on development of ecologically sustainable trails, are that the first is that trail development should match global standards while advancing India's own flagship trails like the Western Himalayan Mega Trail and the new Greenfield Trails. 2, that planning must be scientific, safe, and community integrated with strong environmental safeguards, rescue systems, capacity management, and good storytelling. The third is that the trail should be positioned to leverage the Himalaya brand and diversify into areas like cycling, medicinal plant trails, etc., to expand India's nature adventure appeal. The fourth is to have eco-conservation norms which must guide all trail development, including carrying capacity limits, waste-free policies, and regulating trekking, etc. And lastly, that all these interventions must prioritize community-led low-impact tourism with trained guides, homestays, plant campsites, and guided only sensitive activities like turtle and bird watching. So that in a brief nutshell is what was discussed this morning extensively. Okay. Yes, so the question was on the budget announcement relating to building excellence in hospitality and tourism skills. 2 budget paras were of special interest for us. One was establishment of a National Institute of Hospitality by upgrading the existing NCHMCT so that it will function as a bridge between academia, industry, and the government. This was budget para number 66. And the other budget para number 67 was relating to upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized high-quality 12-week training course in hybrid mode. This was to be done in collaboration with the Indian Institute of Management. So we had about 15 speakers from a very diverse field, including academia, from the industry associations,
and also the practitioners who are, and of course, from our own IITTM and the NCHMCT also. So broad outcomes and suggestions which were noted on budget para number 66 was establishment of National Institute of Hospitality to benchmark Indian hospitality training with best of the world. Like we have a benchmark at the Swiss and the French standards. Nevertheless, we should not lose sight of our own ecosystem, which are very much indigenous and which is growing at a very rapid pace. The second outcome suggestion on NIH was relating to having a formalized MOU between NIH and the luxury hotels for guarantee apprenticeship program. So the apprenticeship program was highlighted by many of the speakers. The third was relating to the development of relevant curriculum of global standard with integration of AR, VR models. We all know about it. Then the other was the building Institute of National and International Standards, offering courses on hybrid modes and courses like recognition of prior learning. So certification and bringing this entire informal sector into a formal sector in the hospitality is one of the main objectives of the entire exercise. Building a global institute accommodating students of diverse culture and background. This was another important outcome and suggestion. A dedicated campus for regular faculty development, enhancing their skills and degrees, was a very, very critical component of the entire thing, because we all know how the faculty is so important in enhancing the quality of the entire exercise. As relating to the guides, which is para number 67, the recognition of the need for guides proficient in high demand foreign language was very important. In fact, IIM Bodh Gaya director mentioned about how a native Bihari speaking person speaks fluent Japanese just because there is a high demand of Japanese for Japanese tourists coming to Bodh Gaya. So that emphasizes or reinforces the point that foreign language proficiency is very, very important in guiding. Then the other outcome was proposal for a unified national certification for guide mobility and service quality, so that we have an international benchmark of the entire thing. The next outcome was mandatory modules on conservation for ASI protected monuments, and the ADG present in the webinar from ASI promised that they will give a list of very good resource who are super experts in the ASI protected monuments, which we can use for our training purposes. The next was on the emphasis on emotional intelligence, crisis management, and Atithi Deve Bhava ethics, which should be imparted to all the guide trainings. The specialized batches for niche areas like adventure guide, wellness guide, and culinary tourism guide was also recognized, and many speakers spoke about it. The next was integration of AR, which I already mentioned, but in this, the storytelling about the monuments, historical monuments, and storytelling about it in an immersive manner was also a highlight of the suggestion which came in the webinar. The other was, of course, the development of the MICE skills for expanding summit sector. That was important. Integration of the first aid and disaster management training as a licensing prerequisite was also mentioned by many of these speakers. Implementation of a digital rating system for guides to ensure accountability was also an important pillar of this entire exercise. All these points which I'm mentioning should go into the framework which we are going to make for the guiding ecosystem. Now I come to the action points, because these were the observations and some of the outcomes of the webinar. In terms of the action points, we need to have immediate commencement of digital and physical infrastructure for the NI, the proposed NIH headquarters. Initiation of annual National Hospitality Skill Competition. Integration of the National Credit Framework for Flexible Credit-Based Learning. And the Joint Secretary MHRD also mentioned about how the use of APAR ID or ABC portal can be used, and how the digital locker can be utilized for putting all the credits taken together at different level of training programs.
So that national credit framework will come handy into entire exercise, in this exercise. Curriculum overall by NCHM to include AI in hotel operation and guest relations was mentioned as action point. Some activity has already happened on this front, but I think more needs to be done. On the action points relating to the guides, creation of a dedicated ministry cell for quarterly monitoring of training impact, because many people also mention about the impact of the training, but this should be done before the start of the training, during the training and post training, up to at least 6 months after the training is completed. So all the impact assessment should be done. Launch of a mobile application for guide booking, digital ID and real-time updates. These are some of the action points which are going to be in hand. Development of specialized modules for the specialized tourist products like medical wellness, airport, river and sea cruise sector was also mentioned. Collaboration with the Ministry of Ayush to train specialized wellness guides was also mentioned as one of the important action point. And establishment of a language labs in major tourism hotspots was also an important action point on this account. There are several very detailed speaker-wise observation and action points are also there, which we will do in a noting format due to lack of paucity of time. We will stop here. Thank you. So we had got Minister of Culture, Secretary of Culture to give the initial remarks. I request Secretary Culture, Vivek Agarwal ji, to give his remarks. Thank you, Srivatsa. I hope I'm audible. Yeah. Yeah, thank you. So we had 2 panel sessions in the morning. One was on National Destination Digital Knowledge Grid, which was very interesting. A lot of practitioners spoke and gave valuable suggestions, which we would present. And the second session was on having the 15 iconic archaeological sites to have visitor infrastructure. We have structured a scheme called Development and Enhancement of Sanskritik Sampada and Heritage Desh. And as part of the seminar, we presented the main features of the new scheme, how the scheme would be implemented and what are the basic elements where we would require the stakeholder engagement, including the states and the city administrations. So that also we had a participation from 9 sector experts who spoke on various aspects, and those suggestions have been well recorded. So now I'll hand it over to Lily Pandya, the Joint Secretary, to talk about the National Destination Digital Knowledge Grid. And then I'll hand it over to Inderjeet for speaking on the Desh scheme. So this is to cover the 2 paras of the budget speech, which have been allocated to Ministry of Culture as a lead ministry. Over to Lily. Thank you, sir. So we had a very robust panel discussion on National Destination Digital Knowledge Grid. And I will just summarize for you some of the most important takeaways from the discussion today. So today's discussion highlighted that India's cultural, spiritual, and heritage assets form a significant part of country's emerging creative or the orange economy, linking culture, creativity, technology, and livelihoods. While India possesses enormous cultural resources across monuments, crafts, performing arts, archives, museums, and manuscripts, information about these assets remain fragmented across institutions and platforms, limiting its accessibility and policy value. The proposed National Destination Digital Knowledge Grid therefore represents a very significant opportunity to create a unified digital ecosystem that connects these cultural data sets into a structured knowledge framework. Importantly, the grid should evolve not merely as a repository or a record or an inventory, but as a planning and decision support tool that informs tourism development, cultural policy, and destination management. Initiatives such as Mera Gaon Meri Dharohar, which is a landmark initiative of the Ministry of Culture, demonstrate how community-led cultural documentation can generate rich data sets at scale, providing strong foundation for the knowledge grid. The discussion also emphasized that cultural knowledge in India is largely embedded within communities, and therefore the platform must promote participatory knowledge creation
involving youth, researchers, artisans, and local communities. In that sense, the knowledge grid can evolve into a dynamic and participatory knowledge ecosystem, a kind of cultural Facebook of India, where stories, traditions, and discoveries are continuously documented and shared. Cultural platforms must also contribute to livelihood generation by digitally empowering the artisans, performers, and culture practitioners, including ensuring inclusive participation for the differently abled individuals. Expanding multilingual data ecosystems will be essential so that cultural knowledge becomes accessible across India's diverse linguistic landscape. Emerging technologies such as artificial intelligence and machine learning can significantly enhance cultural documentation, knowledge discovery, and user engagement. At the same time, the knowledge grid should build upon the existing cultural repositories and government inventories, including archives, museums, manuscripts, and cultural documentation initiatives. Strengthening heritage interpretation and storytelling will also be critical, including the development of small phygital site museums that combine physical and digital narratives to bring local histories alive. Cultural mapping should also help identify infrastructure gaps at tourist destinations, ensuring that heritage sites provide meaningful, accessible visitor experiences. A district-based cultural mapping approach can support the development of heritage clusters and tourism circuits, linking monuments, craft traditions, local markets, and cultural activities. Ultimately, the National Destination Digital Knowledge Grid can become a living cultural knowledge network, connecting heritage communities and technology that help us answer a very important question: what is the future of past? Thank you. Thank you, Ruby. Thank you, sir. Good evening, everybody. The second session focused on the proposed phase framework. This is a framework which is a comprehensive initiative to strengthen India's cultural infrastructure, as outlined by the Minister in the webinar today. There's a felt need for creation of new heritage destinations, branding and rebranding of our cities, towns, and also creating holistic ecosystems. Minister is not visible. Sir, your mic is not mute, so you're heard. I was saying HMT has joined, but he's not visible. So I was asking my team to check. All right, so you took mute yourself. Okay, So- Under. Creating a holistic ecosystem so that the culture and the heritage component goes forward. With respect to that, the discussion explored how archaeological sites, museums, cultural institutions, and heritage precincts can be systematically developed as knowledge spaces, cultural destinations, and engines of local economic growth. We have a discussion which featured experts from various fields. There were 9 specific experts, and we have 9 key takeaways from the discussion we had. The first one is development of archaeological sites under age as an integrated heritage destination, which will combine conservation, interpretation, tourism infra, and obviously community engagement. The second point would be promotion of community archaeological approaches, ensuring that local communities participate in and benefit from heritage preservation efforts. Third was strengthening of institutional capacity and professional capacity in archaeology, conservation, museum management, and heritage interpretation. This was a specific point highlighted that on the lines of the IITs and the IIMs, there is a need of museum managers, conservation managers in the future. Fourth point was the establishment of model interpretation systems, including site museums, digital storytelling, tools, and immersive visitor experiences. Fifth point was ensuring balanced development between conservation priorities as well as visitor accessibility, particularly for the sensitive archaeological sites and the World Heritage Monuments. Sixth point was promotion of integrated cultural circuits, which would go on to link monuments, museums, cultural institutions, and creative economy clusters. Seventh was
encouragement of the use of technology, especially AI-based monitoring tools to manage visitors' flows, assess carrying capacity, and as well as enhancing site management. Eighth point was fostering of public-private partnerships and institutional collaborations to improve heritage management, cultural programming, and visitor engagement. Lastly, strengthening of policy convergence between cultural infrastructure, tourism development, and urban planning for the future sustainable heritage ecosystems. Thank you. Thank you, Inder. Over to you, Srivatsa, for the next part of the closing seminar. Request Hariranjan Rao, Secretary Sports, to offer his remarks. I think Sports Ministry is on mute. We can't hear you. Sir, we have unmuted, sir. Are we audible, sir? Yeah, now you are. Sir, I am Joint Secretary, sir, Vinil Krishna. Actually, sir, Secretary, sir, is busy with India, New Zealand, Honorable Minister, and both the ministers are meeting, sir. Bilateral meeting is going on. Sir, we had a very successful panel discussion, sir. We had very eminent panelists who had joined, and we had streamed it on YouTube also. More than 8,000 views are there, sir. So we had a detailed discussion on the budget announcement regarding Khelo India mission. Sir, I would request our eminent coach Pulel Gopichan, who was in our panel, sir, to kindly tell about the discussion, the key takeaways and recommendations. Yeah, thank you, sir. Can I go ahead? Yeah, please kindly go ahead. Yeah, good evening, everyone. We had very prominent and eminent sports persons, administrators, people of the level of Manu Bakar, and also people from the various organizations who are part of the sporting ecosystem be part of it. We had robust panel discussions where it was primarily felt that sports as a culture in our country is something which has been missing. And to have this, we need to ensure that everybody in the ecosystem has to come together. This was one of the primary takeaways. One of the most important things we have found is it doesn't start after we get the athlete to the playgrounds. In fact, prior to that, what happens also has a significantly important role. Basing and knowing the fact that schools are an important starting point for all of us, it was deliberated and it was discussed to bring back what was there in the past. In the 1960s, we had reports of physical activity being tracked, and hopefully we are wanting to start that process again so that every kid in the country who goes to a school is also marked for his, not only for his academic pursuits, but also for his physical activity and sport. That is something which has come out as important. The other important aspect was at a primary stage, it was important that we have, as a nation, have grown alphabetically and numerically. But in the last 30 odd years, we've gone down physically. So much so that our parents and grandparents are have more physical and better motor qualities than this generation. So it is very important that we start to take a big note of this, and schools are the starting point for this. Nutritionally also, we find that when athletes who come to the sporting grounds at age 10 or 11 come with a lot of deficiencies, and it is important that we address these deficiencies at a primary stage. For us to have what our Prime Minister has put out for us, a top 10 finish at the Olympic Games in 2036, we need all of our guns to be firing. And it's very important that we start off at a very young age. And nutrition is a primary aspect. Physical literacy, physical education teachers at the school are lacking in big scale, and we need to address this at the grassroots level. This is something which was felt is very, very important. Now, once we move to the next stage of development, it's important that we build good infrastructure. This doesn't necessarily mean that we build
big stadiums, because that is what was thought about, that we have a lot of enthusiasm to build big stadiums. But the fact is that to spend a good amount of money to ensure that we build good playgrounds where a lot of people can play in a safe and a secure environment is something which was thought about and which needs to be addressed. The other aspect is also something which is important, which is the fact that stadiums and accessibility to athletes, and also whether it's disabled athletes or senior citizens who are unable to walk up the stairs, we need to provide them with the right kind of infrastructure so that we are accessible infrastructure for everybody. This is something which is thought is important. In the last few years, we have done a lot. In the last 12 odd years, I think the government is, and thanks to the Prime Minister's vision and push, we have a lot of interest in sport and Khelo India, Fit India, Yoga Day, and a lot of things have happened. But in general, we see that the sporting participation is low. So how do we bring this up is an important thing. It was discussed about bringing the Khelo India scheme, which caters to about 3,000 people today, to steps which actually cater furthermore, so that we have more and more athletes benefiting from the scheme. This was something which was deliberated upon. This was something which was presented by the ministry. And to support all of these athletes to participate, whether it's PE teachers at the school level, community or grassroots coaches at the basic level, or intermediate, elite or national level coaches at various levels, coach development and support staff, whether it's physiotherapists, strength and conditioning, psychologists, physiologists, all of these allied activities are very important. So it was deliberated and discussed how we can actually grow the number of people, and the two committees which have given their recommendations about administration and the coaching were also discussed, and certain aspects were spoken on these aspects. Talent identification, once people start playing, play for all was something which was spoken about. And talent identification at various levels, especially at the rural level and for girls, was something which was spoken about. And activities and leagues like the Ashmita League, which was started, and various other competitions at various levels. Today, we have the Khelo India program, but to actually further deepen the structure, there were deliberations about how we can actually bring it down to a zonal level, thereby ensuring that we have more and more athletes who are participating right from the grassroots level, get an opportunity to participate in bigger events. So this was something related to competition, and also the starting of leagues, which was spoken about, because leagues have a lot of community bonding, and how we can popularize the sport at various levels. This was another aspect which was spoken about and deliberated on. Overall, it was felt that everybody needs to be part of this ecosystem, and we need to kind of get together and align our calendars so that we have national, state, whether it's school games, university games, national games, or the Khelo India games are aligned, and a correct calendar comes in for our athletes to move from the district to the state to the national and the international levels. These were some of the points which were discussed upon, and we are very inspired by the Prime Minister's speech and the policy. And last but not the least, I think sports accountability and the passing of the National Sports Code and Fit India movements were also spoken, so that every kid becomes the best version of what they can be. And this can only happen when all of us come together, is the general viewpoint of the panel discussion which we've had. Thank you. Thank you, Gopichand Garu. Yesterday, I believe the World Cup final saw half the country online watching it. We had about 700 million people watching it, and we hope from a tourism point of view, we'll be able to leverage that audience and do something large scale in the experience economy of tourism as well. I now request the Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Srimati Raksha Khadse, for her concluding remarks.
आज के इस हमारी वेबिनार मीटिंग में हमारे आदरणीय मंत्री महोदय और हमारे सेक्रेटरी, सभी हमारे ऑफिसर, सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से इस बार हमने इस बजट में खेलो इंडिया मिशन की एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया से की थी और काफी अच्छा रिस्पांस हमें पूरे देश में दिखाई दिया कि जिसके माध्यम से हम खेल नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह से आज मैं बोल सकती हूँ कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जिस तरह से हम डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्पोर्ट्स कल्चर को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि विकसित भारत का सपना अगर हमें पूरा करना है तो स्पोर्ट्स के बिना वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि फिटनेस हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमारे देश का हर युवा, हर व्यक्ति फिजिकली मेंटली फिट रहना चाहिए। इसलिए सबको स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना काफी जरूरी है। मेडल लाना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ फिटनेस भी हमारे लिए जरूरी है। इसलिए पिछले सेशन में खेलो भारत नीति भी बनाई गई कि जिसके माध्यम से प्रयास यही है कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरे देश में अच्छी तरह से सभी राज्य सरकार के साथ मिलके हम अच्छी तरह से उसे डेवलप कर पाए। और उसके साथ ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के माध्यम से हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका मैपिंग हम कर पाए, कि जिसके माध्यम से हम पब्लिकली ये पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है कि जहाँ पे आम पब्लिक जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती है या खेल सकती है। इसलिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जो अभी यहाँ पे गोपीचंद जी ने बताया कि लीग्स भी हमें करवानी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कंपटीशन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह का एक एनवायरनमेंट हम हमारे एथलीट्स को दे सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम, क्रिकेट तो एक अच्छा गेम है ही और काफी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है, लेकिन उसके साथ जो हमारे दूसरे गेम्स है उसको लीग्स के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और आज जो हमारा वेबिनार है टूरिज्म का है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। जो अभी भी यहाँ पे उसका उल्लेख हुआ कि स्पोर्ट्स टूरिज्म हमारे सेक्टर के लिए या हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए या हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है कि स्पोर्ट्स टूरिज्म को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, कि जिसके माध्यम से हम इकोनॉमिकली भी ग्रोथ कर पाएंगे। जस्ट उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूंगी कि जस्ट अभी पिछले महीने में ही जनवरी मतलब जस्ट एक महीने पहले ही पुणे में हमने साइकिलिंग का कंपटीशन करवाया, जो काफी बड़े पैमाने पे हुआ। लगभग वहाँ 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा ग्लोबली हम मैसेज इस साइकिलिंग इवेंट के माध्यम से दे पाए, कि जहाँ लोगों को एक विश्वास आने लगा है कि हम भारत में भी स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ ही स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे अहम बात इसमें ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी रखी कि हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोफेशनली इसको स्पोर्ट्स को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कैसे हम प्रयास कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से ज्यादा हम पीपी मॉडल पे प्रोजेक्ट आगे ला सकते हैं और इन्हें स्पोर्ट्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो ग्रास रूट टैलेंट की यहाँ पे बात रखी है, तो उसके लिए भी खेलो इंडिया मिशन के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो सके, कि जिसके माध्यम से हम अच्छे टैलेंट को आगे ला सकते हैं और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे देश के लिए खेलने के लिए हम दे सकते हैं। और जो यहाँ पे अस्मिता के बारे में बताया गया, तो अस्मिता लीग्स की शुरुआत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसका मकसद था कि हमारे देश की सभी बेटियां, सभी महिलाएं स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, हमारे देश के लिए खेले। इसलिए एक छोटा सा कल महिला दिवस के अवसर पे हमने एक छोटी सी कोशिश की कि देश भर में 250 डिस्ट्रिक्ट में हमने कल ये इवेंट करवाया और मुझे आज खुशी हो रही बताते हुए कि लगभग 2 लाख महिलाओं ने इस इवेंट में पार्टिसिपेशन किया। और इसका यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा हम स्पोर्ट्स कल्चर को ग्रास रूट तक लेके जाए और एक अच्छा टैलेंट आगे आए। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री प्रयास कर रही है कि किस तरह से हम स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स टूरिज्म,
स्पोर्ट्स साइंस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस का भी काफी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में आने वाला है, क्योंकि वो जरूरी है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया, फिजियो के बारे में बताया गया, वो भी एक अहम हिस्सा है। तो वो स्कूल के माध्यम से हमें पहले से ही बच्चों को स्पोर्ट्स साइंस के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, या उन्हें अवेयर कैसे कर सकते हैं, या उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे कोचेस है उनको अपग्रेड हम कैसे कर सकते हैं, सभी राज्य सरकार के साथ मिलके हम हमारे कोचेस को और अच्छे से ट्रेन कैसे कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक उन्हें कैसे लेके जा सकते हैं, कि जिसके ज्यादा से ज्यादा सुविधा हमारे सभी देश के एथलीट्स को पहले से ही उपलब्ध हो सकती है। तो इस तरह से पूरा प्रयास हमारा चल रहा है कि स्पोर्ट्स को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे खुशी है कि आज कॉर्पोरेट सेक्टर भी हमारे साथ जुड़ रहा है, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जो हमारे अच्छे एथलीट्स है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के साथ मिलके हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। तो मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से मिनिस्ट्री के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से जो स्पोर्ट्स को लेके कोशिश हो रही है, तो डेफिनेटली हम 2036 तक हमारे देश के अच्छे एथलीट्स हम आगे ला सकेंगे, जो कि हमारे देश के लिए खेल पाएंगे और हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर को अच्छी तरह से डेवलप कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Madam. I now request the Honorable Minister for Tourism and Culture, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, for his guidance and concluding remarks. He's been someone who has always spoken about the synergy between tourism, culture, sports, skills, all contributing towards a Viksit Bharat. So over to you, sir, for your guidance and concluding remarks. सम्मानित साथी मंत्रीगण, विषयों से जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, और इसके साथ में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के सभी साथी स्टेक होल्डर्स, और इसके अतिरिक्त देश और दुनिया से जितने लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हैं, मैं आप सबको हार्दिक अभिवादन करता हूं। मित्रों, मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले ऋग्वेद की एक पंक्ति का उल्लेख करना चाहता हूं। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, और इसका अभिप्रेत है कि दुनिया के सब श्रेष्ठ विचार हमारे पास में आए। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बजट के बाद इस तरह से वेबिनार करके हम इन विषयों पर जुड़े हुए सारे विषय विशेषज्ञों से एक साथ चर्चा करें और इस बजट का ठीक से उपयोग सही रास्ते पर और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ में हो सके, इसको सुनिश्चित करने में कामयाब हो। और ये कथन और हमारा ये व्यवहार हजारों हजारों सालों से भारत में, जिस तरह से भारत ने दुनिया भर के विचारों का, दुनिया भर के साधकों का, दुनिया भर के यात्रियों का, विद्वानों का और साधकों का स्वागत किया है, उसको हमारे आचरण और व्यवहार में दर्शाता है। मित्रों, भारत की सभ्यता में यात्रा केवल भ्रमण या रिक्रिएशन का मात्र माध्यम नहीं थी, अभी तो इसके विपरीत ज्ञान की खोज, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संवाद और मानवता के आपस में मिलने के एक माध्यम के रूप में थे। आप हजारों साल का भारत का इतिहास उठा करके देखिए, प्राचीन तीर्थ स्थानों से लेकर के धार्मिक उद्देश्य से की जाने वाली यात्राओं से लेकर के नालंदा, तक्षशिला जैसे ज्ञान के केंद्रों और उसके साथ साथ में समुद्री व्यापार जो हमारा हजारों सालों पहले तक दुनिया के विभिन्न देशों के साथ में एस्टैब्लिश था, जिसके स्पष्ट प्रमाण आज हम सब लोग देख सकते हैं, खोज सकते हैं और निरंतर उसमें अभिवृद्धि हो रही है, उससे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ में इस विषय में और अधिक गहराई के साथ में उतरने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भारत की इस विकास यात्रा में पर्यटन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल रोजगार के स्रोत के रूप में,
अपितु उसके साथ साथ में स्थानीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में और भारत की सांस्कृतिक पहचान को पूरे विश्व भर में पहुंचाने के दृष्टिकोण से, और इन सब के साथ साथ में क्योंकि हमारा देश अत्यंत विविधताओं से भरा हुआ है, उन सभी विविधताओं का दर्शन भारत के निवासी भी कर सकें, इस दृष्टिकोण से भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज के इस पोस्ट बजट वेबिनार की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके प्रेरणादायी संबोधन से हुई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यूनियन बजट 2026 केवल संसाधनों का आवंटन मात्र या उसका लेखा जोखा मात्र नहीं है, अपितु ये 140 करोड़ भारतीयों की एस्पिरेशंस को फुलफिलमेंट करने का एक रोड मैप है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने वाला है। आज की चर्चा से मित्रों एक बात सुबह से लेकर के अब तक ये निश्चित रूप से स्पष्ट हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय से शुरुआत की कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, स्किल, कल्चर और स्पोर्ट्स, अभी रक्षा जी भी यही बात कर रही थी, ये सब क्षेत्र केवल एक सेक्टर या स्टैंड अलोन सेक्टर मात्र नहीं, अपितु ये सारे सेक्टर्स जो हैं रोजगार और उसके साथ साथ में इंडस्ट्रियसनेस और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। और इस यात्रा में निश्चित रूप से अल्टीमेट आउटकम जो है वो पर्यटन के दृष्टिकोण, पर्यटन के क्षेत्र को मिलता है। भारत के पर्यटन क्षेत्र में जैसा हम सब लोग, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हैं, हम सब जानते हैं दैट नेचुरल ब्यूटी इज नॉट द ओनली रिसोर्स फॉर अस, केवल वो हमारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अतिरिक्त भी हमारी जो सबसे बड़ी ताकत और जो भारत को दुनिया में एक वैशिष्ट प्रदान करती है वो है हमारी संस्कृति और संस्कृति की विविधता। हमारे यहाँ एक तरफ नेचुरल ब्यूटीज है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे एक सुदीर्घ इतिहास हम समेटे हुए हैं, मानव सभ्यता के उद्विकास की एक बड़ी स्टोरी हम साथ में लेकर के चलने वाले देश हैं और उसके साथ साथ में हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी ताकत टूरिज्म के दृष्टिकोण से है। और ये सब मिल करके भारत के टूरिज्म के एक्सपीरियंस को या भारत में भ्रमण करने वाले देशी और विदेशी टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को जो है वो एक यूनिकनेस प्रदान करती है, अनूठापन प्रदान करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के संस्कृति मंत्रालय को, भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्ट्री को और राज्यों में भी इसी तरह से इन सब को स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स, क्योंकि एक नया वर्टिकल इस दृष्टिकोण से हो सकता है, जैसा अभी रक्षा जी ने कहा, इस चर्चा में आया, पुलेला गोपीचंद जी ने भी जिसकी बात की, ये भारत का नया पर्यटन का मॉडल जो है इन सब के इंटीग्रेशन से बन सकता है। मित्रों, अगर मैं टूरिज्म के दृष्टिकोण से, कल्चरल टूरिज्म के दृष्टिकोण से बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो इस बजट में 15 ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पुरातात्विक स्थानों का जो एक्सपीरियंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशन में परिवर्तित करने की जो बात की गई है वो निश्चित रूप से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है और एक सक्सेस स्टोरी के आउटकम के रूप में है। हम ऐसे, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन वड़नगर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मस्थल है वो एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट थी और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट्स पे सामान्यतः इस तरह से होता था कि हम उसके एक्सकेवेशन के बाद में, साइंटिफिक स्टडीज के बाद में या तो उसको बंद कर देते थे या रीफिल कर देते या उसको अबंडन करके और उसको क्वार्डन ऑफ करके छोड़ देते थे। लेकिन वड़नगर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरुआत हुई कि हम उसको एक लाइव एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में डेवलप करें और वहां जो कोई भी गया है उसने उसकी न केवल प्रशंसा की है, अभी तो उससे प्रभावित होकर के वहां से लौटा है और उससे सीख करके देश में 15 इस तरह के डेस्टिनेशन नए डेवलप किए जाए। एक तरफ वो भारत की कहानी को दर्शाएंगे, दूसरी तरफ भारत की विविधता का दर्शन करेंगे, तीसरी तरफ भारत की कंटिजिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर को प्रमाणित करेंगे और चौथा जो हमारे एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस हैं उनको डीकंजेस्ट करने के दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। वहां बेहतर विजिटर फैसिलिटीज हो, इंटरप्रिटेशन सिस्टम हो,
और टेक्नोलॉजी बेस्ड इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस हम वहाँ क्रिएट कर सकें, ताकि वहां जाने वाला हर व्यक्ति जो है हमारी समृद्ध विरासत को देख करके न केवल अभिभूत हो, अपितु भारत के प्रति एक नया दृष्टिकोण लेकर के जाए। तो पर्यटन की असली ताकत जो है हमारी आज की चर्चा में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये बात कही है कि ये जो है केवल हमारे मॉन्यूमेंट्स या हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल जो है उनका होना मात्र पर्यटन की असली ताकत नहीं होता। पर्यटन की असली ताकत होती है उस सेक्टर से जुड़े हुए सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स। और जब मैं स्टेक होल्डर्स की बात करता हूं तो एक बहुत विशाल जो है उसका पैमाना है। हमने इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन मित्र परियोजना शुरू की, उस पर हमने काम किया। देश भर के स्थलों पर ऐसे सारे स्टेक होल्डर्स को हम टूरिस्ट के एक फ्रेंड के रूप में डेवलप कर सकें, उनको ग्रो कर सकें, इस दृष्टिकोण से हमने बातचीत की थी और हमने कुछ प्रयास भी उस दृष्टिकोण से किए। इसके साथ साथ में नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट और क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको अब अपग्रेड करके हम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के रूप में, क्योंकि जिस तरह से हमारा टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ रहा है और जिस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट हम सबको निर्देश कि हम अपने इनबाउंड टूरिस्ट की संख्या को 2 करोड़ से बढ़ा करके हम 10 करोड़ तक लेकर के जाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम कमिटमेंट के साथ में जब आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है एक ऑर्गेनिकली हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के साथ जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारी कनेक्टिविटी में इंक्रीज हुआ है, उसके कारण से जो है हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरह से ग्रो हो रहा है, उस पोटेंशियल को देखते हुए आने अब वर्तमान में भारत में जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तेज गति के साथ में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन और टूरिज्म एजुकेशन की दिशा में और अधिक गति प्राप्त करने की आवश्यकता। और मैं ये मानता हूं कि ये बजट अनाउंसमेंट एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में खड़ा करने की जो बात की गई है, ये निश्चित रूप से उस दिशा को में हमको एक जो है एक लीप फ्रॉग, हमको एक जंप देकर के क्वांटम जंप के साथ में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ में इस बजट में जैसा अभी सभी स्टेक होल्डर्स ने इसमें बातचीत की कि 10,000 नए टूरिस्ट गाइड्स को अपस्किल हम किस तरह से कर सकते हैं, उनको जो है हम रीस्किल कैसे कर सकते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ करके और एम्पावर कैसे कर सकते हैं, इसके एक नेशनल मिशन की शुरुआत की बातचीत की है। और मैं ये मानता हूं कि मिशन मोड में अगर हम 10,000 लोगों को इस तरह का से अपस्किल कर पाएंगे, वो बेटर स्टोरी टेलर के रूप में बनेंगे, वो उस स्थान के बारे में ठीक से पूरी जो है जानकारी के साथ में सटीक रूप से बात करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी प्रभाव, उनकी बातचीत का प्रभाव और टूरिस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एलिवेट करेगा और उसको भारत के प्रति या उस स्थल विशेष के प्रति जो है उसको और अधिक उसके मन में आकर्षण को पैदा करेगा। तो आज पर्यटन का परिदृश्य विश्व भर में बहुत तेजी के साथ में बदल रहा है। आज का पर्यटक जो है वो केवल किसी मॉन्यूमेंट को या किसी जगह को नहीं देखना चाहता, वो प्रामाणिकता के साथ में वहां की स्थानीय कल्चर के साथ में जुड़ना चाहता है, वो वहां की लोकल कल्चर, लोकल क्राफ्ट, लोकल क्यूजीन, इस सब के को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इसीलिए सब आजकल सब लोग टूरिज्म सेक्टर के सभी लोग जब ये बात करते हैं कि आज टूरिज्म जो है वो एक्सपीरियंस ड्रिवन टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से ये दोनों विषय कि हम हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए जो है हम ट्रेनिंग लोगों को, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करें, और साथ साथ में टूरिज्म के जो फ्रंटलाइन स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम जो है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के दृष्टिकोण से और अधिक बेहतर तरीके से इक्विप करें, ये निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में इस बजट में एक विषय जिसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा हुई, आप में से भी कुछ लोगों ने उसका उल्लेख किया, वो है नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की बात। ये पर्यटन स्थलों की पहचान को मजबूत करे। आज बहुत सारे हमारे नए पर्यटन स्थल या ऐसे हिडन जेम्स हैं जिनके बारे में आज जो है लोगों को, चाहे वो देश में रह रहे हो या देश के बाहर रह रहे हो, उनको उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी सुबह कहा था कि कुछ लिमिटेड जगह ऐसी भारत में है, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जयपुर, आगरा और दिल्ली,
ये सर्किट जिसको गोल्डन ट्रायंगल की बात की गई थी, भारत में विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक समय में जब ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, जब हमारे पास में इस तरह से इंटरनेट और ऑनलाइन कंटेंट की सुविधा नहीं थी, सोशल मीडिया के वर्टिकल्स और प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो ये ट्रायंगल ही भारत की पहचान। और भारत आने वाले लगभग अधिसंख्य टूरिस्ट, अगर अनुमान किया जाए तो लगभग 65-70% जो है वो इन 3 जगहों पर जाकर के भारत गए, ऐसा मान लेते थे। लेकिन इससे अधिक जो नए जेम्स हैं, जो छोटे छोटे शहरों में हैं, जो गाँव में हैं, जो कहीं सुदूर स्थानों पर है, कहीं ट्राइबल हैमलेट्स में है, इन सबको जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल जो है, इस सबको जो है हार्नेस करने के दृष्टिकोण से ये जो नेशनल ग्रिड की बात की गई है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। और भारत जैसे विविधताओं से भरे हुए देश, नेचुरल डाइवर्सिटीज एज वेल एज कल्चरल डाइवर्सिटीज, इन सबको शोकेस करने के लिए एक नए पोटेंशियल का सृजन करने वाले। मित्रों, इसके साथ साथ में टूरिज्म का एक और भी इंपॉर्टेंट पहलू है, एंड वो है सस्टेनेबिलिटी। हम सब लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को हमको जो है टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ इक्वल जो है एम्फेसिस देते हुए उस पर काम करना पड़ेगा। और जब मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करता हूं, तब उसके लिए एक होलिस्टिक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट को प्लान करना होता है। उस मॉन्यूमेंट के आस जो है इर्द गिर्द, उसके आस पड़ोस में, वहां हम जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर काम करें, सस्टेनेबल सिस्टमेटिक डेवलपमेंट पर काम करें। लेकिन उस शहर को भी पूरे को, एक टूरिस्ट का अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस एलिवेट करना है, तो जहां वो टूरिस्ट का अराइवल पॉइंट है, मे बी इट इज रेलवे स्टेशन और इट इज ए बस टर्मिनल और इट इज ए एयरपोर्ट, वहां से लेकर के टूरिस्ट शहर में जहां जिन जिन स्थानों पर जाता है, उन सब जगहों का एक होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट हम दोनों करें, तब हम ओवरऑल जो है टूरिज्म को ग्रो वहां कर पाएंगे और टूरिस्ट का एक्सपीरियंस भी हम जो है उसको एलिवेट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए केवल सरकार एफर्ट्स करेगी या केवल टूरिज्म डिपार्टमेंट एफर्ट्स करेगा तब नहीं हो सकेगा। हमको कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। हमको सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ उसके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको अचीव कर पाएंगे। मित्रों, आज के डिस्कशंस को जितना पार्लियामेंट के समय के अतिरिक्त आप लोगों के साथ रह करके मैंने सुना, मुझे लगता है कि 3 प्राथमिकताएं आज स्पष्ट रूप से सामने आई है। पहली, कन्वर्जेंस, जिसकी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में की, एक ही हम टूरिज्म को, कल्चर को जो कभी जो है सेपरेट नहीं किए जा सकते, उनके साथ में स्किल को, उनके साथ में स्पोर्ट्स को, इन सबको एक साथ जोड़ करके एक बेटर कोहेरेंस कैसे डेवलप हो सकती है, इन सबको साथ जोड़ करके हम ज्यादा सिनर्जिक तरीके से किस तरह से काम कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से काम करें। और उसके साथ साथ में टूरिज्म में, क्योंकि स्टेट्स भी हमारे इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके कंधों पर भारत सरकार से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में हम स्टेट्स के और देश की सरकार के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, कन्वर्जेंस कैसे हो, इसको प्राथमिकता देने करके हम सबको आगे काम करने की आवश्यकता है। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, और जो जिसके बारे में मैंने पहले विस्तार से बात की है कि पर्यटन उद्योग के लिए हमको कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारा ध्यान देने और काम करने की आवश्यकता है। और तीसरी है सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। तो हम अगर टूरिज्म को ग्रो करना चाहते हैं, भारत की पहचान नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इन तीनों फैक्टर्स पर हमको साथ काम करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको फिर से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए और पर्यटन का सुनहरा भविष्य भारत में बने, इसके लिए सरकार अकेली काम नहीं कर सकती। इसके लिए हमको गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को, और उसके साथ साथ में लोकल गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज, इन सबको साथ में मिलकर के एक ही दिशा में, एक ही उद्देश्य के साथ में काम करना पड़ेगा। मित्रों, जब सरकार नीतियां बनाती है और इंडस्ट्री अपने तरफ से नवाचार लेकर के आता है और समुदाय उसका भागीदार बन जाता है, तो निश्चित रूप से इन तीनों फैक्टर्स को हम साइमल्टेनियसली एड्रेस करते हुए नए एक्सपीरियंसेस का क्रिएशन कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज का ये वेबिनार जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ में शुरू हुआ, ये सरकार, उद्योग, इन दोनों के बीच में इस तरह का कोहेरेंस डेवलप करने और हम एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ में सब लोग मिलकर के काम करें। सरकार के डिफरेंट वर्टिकल्स,
स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्टिकल्स और इसके साथ साथ में इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर, हम सब मिलकर के इस महत्वपूर्ण मंच पर संवाद करते हुए आगे बढ़े। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से जो है हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज आगे बढ़ सकते हैं। और अंततः हमारा लक्ष्य ये है कि भारत विकसित बने, और विकसित होते हुए वो भारत के विकास के इस क्रम में टूरिज्म का सेक्टर जो है वो बड़ा एक कंट्रीब्यूटर बने, उसका ग्रोथ इंजन बने। हम सब जानते हैं कि टूरिज्म क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगारों का सृजन करने वाला क्षेत्र है, ऐसा मानते हैं। दुनिया में का टूरिज्म की ग्लोबल इकोनॉमी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 10% के आसपास है, जबकि भारत में हम 5 और 6% के बीच में। अगर 10% हमारी नेशनल जीडीपी में अगर हमारा कंट्रीब्यूशन होता है तो मित्रों निश्चित रूप से भारत जो है का पूरे भारत में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर जो है वो टूरिज्म बन जाएगा। और इसके साथ साथ में टूरिज्म की इकोनॉमी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है, मोस्ट डेमोक्रेटिक इकोनॉमी होती है, ऐसा पूरे विश्व भर में एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो ऐसे में हम सब मिलकर के यदि काम करते हैं तो हम भारत के ग्रोथ इंजन के में भी एक सहभागी बनते हैं। टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन करके हम नए एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कर सकते हैं। और इसमें आप सब लोगों ने आज जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ में सबने भाग लिया है, मैं उसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इंडिया इज ए कंट्री विच नॉट ओनली इट डजंट नॉट मेयरली इट ऑफर ओनली डेस्टिनेशंस, it offers experience and it can even offer better experiences. The experiences which are shaped by thousands of years of civilization, diverse culture and the warmth of our people. आप सबको मैं एक बार फिर धन्यवाद करके आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज शुरुआत हुई है, ये शुरुआत केवल आज की पोस्ट बजट वेबिनार तक सीमित नहीं रहे, अपितु हम निरंतर इस तरह का संवाद करते हुए हम रोजगार को बढ़ाने, इंडस्ट्रियसनेस को बढ़ाने और सबसे साथ साथ में भारत को विकसित करने के लिए, भारत को सबसे आकर्षक और सबसे अनूठे अनुभव प्रदान करने वाले डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए हम सब लोग मिलकर के साथ निरंतर संवाद करते हुए काम करेंगे तो हम सफलता के उस लक्ष्य और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आकांक्षा और अपेक्षा है उसके अनुरूप हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बार फिर सब स्टेक होल्डर्स जिन्होंने दिन भर इस विचार मंथन में अपनी सहभागिता की, पूरी ऊर्जा के साथ में अपने पूरे अनुभव को साझा किया और पूरी निष्पक्षता के साथ में सब लोगों ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जिस तरह से बातचीत की, खुल करके जिस तरह से इस चर्चा को महज एक सरकारी संवाद नहीं अभी तो एक सेक्टर को पूरे को प्रमोट करने वाले संवाद के रूप में के मंच के रूप में जिस तरह से संवाद किया, मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूं, बहुत सारा धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार। I'd like to thank the Honorable Minister for Tourism and Culture, the Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sport, my colleagues in different ministries, all the various experts from the private sector, from the not-for-profit sector who have given their time so generously today. We have noted down all your points and suggestions, and it'll be our best endeavor to work on them under the guidance of the Honorable Minister. Thank you very much. Thank you. Thank you. This meeting is no longer being recorded. Thank you.